Hello dear friends, welcome to another special program presentation from Doordarshan Kendra Itanagar. I am your host Sanju Dodum, and today I have with me a very special person, someone who's equally beautiful and talented and has represented our state in the national arena. I have with me Miss Tengam Celine Koyu. She is Miss Arunachal 2021 and she's also represented us, or rather our state, in Miss India 2022, when she came back with the two titles of Miss Talent and Miss Radiant Smile. First of all, Tengam, welcome to our studios. Thank you very much for being with us today. Thank you so much. Thank you so much for having me. It's our delight, and if I may start off with the first question, yes. A fairly typical question जिसको शायद आपने बहुत बार सुन चुके हैं कि सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो आपकी ये जो सफ़र रहा ब्यूटी पेजेंट्स का, मिस अरुणाचल, फिर मिस इंडिया, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? So I started way back in 2016. 2016 को I participated in my first pageant. वैसे मन तो मेरा पहले से था, छोटा से ही था. When I used to watch TV में जो पता चला कि प्रियंका चोपड़ा was Miss World, ऐश्वर्या राय was Miss World, सुष्मिता सेन Miss Universe, तो वो लोग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरा लाइफ में, इंस्पायर किया है ब्यूटी पेजेंट्स में जाने के लिए, क्योंकि उन लोग को देख के लगा कि ब्यूटी पेजेंट सिर्फ एक साल का टेन्योर नहीं होता है फुलफिल करने के लिए. यू कैन अचीव अ वे मोर देन एनीथिंग एल्स बाद में जाके. So that way, when I passed out my class 12, I think I was 17 years old or something. So I started my first pageant there in 2016. तो उसके बाद में I stopped for a while. वो pageant में तो मेरा, it was my first pageant. I was very raw, so I couldn't win it. But I was placed in top 20. So after that, I took a break from pageantry because I wanted to concentrate on my studies. So I completed my BA ख़त्म होके फिर masters किया. तो masters का duration में I started pageantry again and I participated in Miss Arunachal 2020. तो वहाँ पे I placed in top 5 and I couldn't win that time, but then I made sure that I'll come back stronger next time to win that title. So in 2021 I participated again and I won. Yes, you did. Can you tell us from the initial time when you first participated in the very first pageant which you said जिसमें आप नहीं जीती, हाँ, उससे लेके उसके बाद 2021 तक जब आप एक्चुअली में जीत चुकी थी, उसमें आपके अंदर क्या मतलब तब्दीलियाँ आई? आपको क्या लगा कि how did you change, probably grow as a person, which helped you win the title? So as I told earlier कि जैसे मेरा journey 2016 में शुरू हुआ, I was very raw. I thought कि modeling is just about you need to carry 2 pair of heels and just walk on a platform. That's it. लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में I saw कि लड़की लोग अपना कितना हार्ड वर्क डालता है, अपना डिटर्मिनेशन डालता है, और उसमें भी उन लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है एक प्रॉपर वे से चलने के लिए, बोलने के लिए. So I knew कि I'm quite young for this as of now, so I have to come physically and mentally prepared बाद में जाके. So I took that time to learn something out of myself, मेरा जो life experiences है, and I wanted to concentrate on my studies as well. So when I completed everything, तब I was like, now I am ready. अभी now is the right time to grab this opportunity if it's gonna come to me. So without thinking anything, I participated. So there wasn't much thought process behind the participation? No. I just knew that I'm ready for this now. Pehle I was too young, too naive. Right. But as I grew older, I thought that maybe I'm ready for this now. So there was no looking back after that. Right. Now, see, as you mentioned yourself, initially even your impression about beauty pageant was that it's basically about ramp walk करना है, उससे हो जाता है. तो ऐसा कोई पहलू है beauty pageants के बारे में जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है, but which is actually quite tough? आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को जाननी चाहिए कि ब्यूटी पेजेंट्स में ये भी एक पहलू है जिसको लोग शायद जानते नहीं है, पर जिसको शायद आप थोड़ा इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? So people think that beauty pageant is all about
crowning someone who has the most beautiful face or the most beautiful figure. लेकिन it's much more than that. ऐसा नहीं है कि सबसे सुंदर वाला ही जीतेगा. आपका अंदर एक वो पर्सनैलिटी होना पड़ेगा, एक पर्सनैलिटी होना पड़ेगा जो कि ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं. जो अगर फॉर एग्जांपल इट्स मिस अरुणाचल, तो जो मिस अरुणाचल का विनर है वो अपना अरुणाचल का जितना सिटीजन्स है उसके साथ कनेक्ट कर पाना चाहिए. एंड इट्स वे मोर देन यू नो आपका 1 साल का टेन्योर वो तो हाँ रहेगा, लेकिन उसमें आप क्या डिफरेंसेस लेके आ सकते हैं. आप कैसे हम लोग का जो स्टेट का यूथ है या फिर कहीं का भी यूथ है उन लोग को इंस्पायर कर सकते हैं कि एक ब्यूटी पेजेंट को एक पॉजिटिव वे में देखो. तो पीपल थिंक कि यू नो सिर्फ सुंदर होने से हो जाता है. नहीं, ऐसे नहीं. आपको उसमें इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरत है. यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल सो दैट दे विल अंडरस्टैंड व्हाट योर व्यू पॉइंट इज इन अबाउट लाइक इन एनी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. राइट. आपको लगता है कि ये जो परसेप्शन जिसके बारे में अभी हमने बात की है ये वक्त के साथ थोड़ा बदल रहा है कि मे बी देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल एसोसिएटेड ब्यूटी पेजेंट्स सोली विद लुक्स एंड अदर सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स. डू यू थिंक कुछ बदलाव सा आ रहा है लोगों में आजकल? मे बी मोर देयर इज मोर अवेयरनेस कि इट्स मोर देन जस्ट अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल. यस. पहले तो यू नो दे यूज्ड टू थिंक कि ब्यूटी पेजेंट मतलब इट्स जस्ट अ वे टू गेट पॉपुलर, ऐसे सोचता था. लेकिन अभी ब्यूटी पेजेंट को स्पेशली हम लोग का स्टेट में इज्जत मिलना शुरू हो गया है. जो अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट हमको मिला है मिस अरुणाचल जीतने के बाद, आई डोंट थिंक सो आई हैव गेन्ड मोर देन एनीथिंग. मतलब कहीं में जाके भी इतना रिस्पेक्ट गेन नहीं हुआ जितना मिस अरुणाचल में पार्टिसिपेट होके हुआ है. तो आई थिंक नाउ इट्स काइंड ऑफ एसोसिएटेड विद अ रिस्पेक्टेबल वैल्यू दैट पीपल हैव इन द सोसाइटी. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज हम लोग एक टाइम स्पैन से आया है जब लोग सोचता था कि ब्यूटी पेजेंट एक लड़की लोग को सिर्फ एक्सप्लॉइट करने का चीज़ है. नाउ इट्स लाइक नहीं, ये एक लड़की लोग को प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि वो लोग वर्ल्डली इश्यूज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं. आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, हाउ डू यू थिंक दैट हैज कम अबाउट? इज इट वुड यू परहैप्स गिव सम क्रेडिट ऑफ दिस टू द previous winners, maybe those who have actually won the title previously and have actually made a good name for themselves in society, yes, and not just... Yes, absolutely. I think everyone has a great role to play in this. लेकिन apart from that, I think कि अभी हम लोग का society जैसे आगे बढ़ा है, we came to know about women empowerment, feminism आ गया in picture. So now people they know the social values of a woman now. It's not just about cooking and feeding your family. It's more than just taking care of the whole family. It's about being just a woman and what you aspire and inspire to be as well. So अभी जाके टाइम जैसे पास ऑन हुआ है, हम लोग को वुमेन को ऐसे देखने के लिए मिला है. वुमेन एम्पावरमेंट फेमिनिज्म का वजह से वुमेन दे स्टार्टेड टू स्पीक अप अबाउट इश्यूज. तो उसके वजह से नाउ पीपल आर लाइक now we cannot offend anyone at this point of time, especially now we are living in 21st century. तो हम लोग अभी तो इक्वालिटी के ऊपर में बिलीव करते हैं, इक्विटी के ऊपर बिलीव करते हैं. तो it's just a perception कि women and men we need the same kind of respect. Right. So you would say that whatever changes you might have seen with respect to how people view beauty pageants and such titles, that is not a thing in itself. It's rather वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है. Yes, exactly. Okay. Now you recently came back from Mumbai after having competed in Miss India, wherein you represented our state, and you also won 2 titles of Miss Talent and Miss Radiant Smile. And the Radiant Smile thing is obviously self-explanatory. How was the experience for you? I mean, especially considering that you are from Arunachal, from Northeast, where people tend to have a lot of expectation when people from our place, our region go and represent the state in a national arena. They tend to have a lot of expectation from. आपको कभी लगा कि मतलब ये जो आपके ऊपर शायद एक किस्म से एक प्रेशर सा है कि कुछ करके ही आना है, कुछ जीत के ही आना है? आपको कुछ फील? I consider myself as a very patriotic person. हमको भी ऐसा था कि अगर हम जाएगा तो हमको
कुछ खाली हाथ वापस नहीं आना है, अरुणाचल के लिए कुछ तो लेके आना है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम लोग को मतलब we don't get representation, to be very honest, especially in the mainland area. तो हम लोग को इतना representation नहीं मिलता है. तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि वहाँ में जाके हम लोग का जो अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को जो representation नहीं मिलता है उसको पूरा देने का कोशिश करेगा. That was my thing. That's why you know, in many instances when we had to go for certain events and all, I chose to wear clothes which had traditional motifs and arts in my clothes, because I was bound to wear something in Western, but I thought maybe I can inculcate the traditional motifs in my Western dresses. So that's how I try to, you know, bring light to our traditions as well. So apart from just, you know, being there for my personal achievement, I also wanted to tell people, show people that what Arunachal and what Northeast is all about. So that was my main motive, and I do not think that I had any pressure. I enjoyed every bit of it. So you thrived under pressure. Yes. Okay. Now, can you tell me, like, how was the response from people over there? Like, unko, matlab, how did they react to, like you said, you know, you had to wear a Western dress, but you went and wore something which had traditional motifs anyway. So how was their response? How are they also warming up to Northeasterners more as opposed to maybe पहले जैसा था? हाँ, आप पहले जैसे देखिए कि मिस इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉर्थ ईस्ट का लोग को वो लोग एक टाइटल भी देते हैं. वो लोग हर रोज़ किसी दूसरे को सेलेक्ट करता था जो कि मतलब एक मेन एरिया में रहता था. लेकिन इन 2017 दे केम अप विद स्टेट रिप्रेजेंटेशन. तो वहाँ से आई थिंक हम लोग को बहुत हेल्प मिला है अपना खुद को एक नेशनल प्लेटफॉर्म में शो करने के लिए. लेकिन इट्स, यू नो, अपना इंटेंशन से भी होता है कि आप किस इंटेंशन से वो पार्टिसिपेट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो मेरा इंटेंशन था कि हमको रिप्रेजेंट करना है मेरा स्टेट जितना अच्छे से हो सके उस वे में. किसी का होता है इंटेंशन कि आई वांट टू डू इट फॉर माई सेल्फ, लेकिन दैट इज़ नॉट रॉन्ग एज वेल. लेकिन मेरा मोटिव तो वही था कि अरुणाचल को सबके सामने में दिखाना है, एंड देन दे रियली अप्रिशिएटेड दैट एज वेल. एंड आई फील दैट हम लोग का जैसे कॉन्टेस्ट आगे बढ़ता गया वैसे ही इवन बाहर का लोग जैसे कि बहुत सारा फ़ैन पेजेस होता है पैजेंट का, they started recognizing me because of the way I dressed, because of the way I talk and look. तो वो सब चीज़ में, and I tried my best to tell people about Arunachal. And even when I met everyone, जब भी किसी को भी मिलता था, you know, I would tell them about Arunachal कि अरे हमारे उधर में गोल्डन पगोड़ा है, तवांग मोनास्ट्री है, पासीघाट का beautiful scenery, you should definitely come. I should tell them about these things. So you were truly an ambassador of Arunachal Yes, Pradesh. I did my best. Okay. Now, coming back to one of the more reoccurring criticism or critique, let's say, of beauty pageants is that, like you said, it is actually empowering, and because, you know, it's a representation of the times that we live in. But some people would still say that the primary focus still remains on certain superficial aspects like looks. How would you react to that? To some extent it's kind of true, I think. Because we have to go through certain criteria. आपको एक height criteria को fulfill करना होगा, एक age criteria को fulfill करना होगा. I understand that कि हाँ कोई ना कोई इससे relate कर सकता है, जो maybe they aspired to participate in this competition but they lacked, उन लोग का height criteria नहीं पहुंचा होगा, ऐसा हो सकता है. So I understand that. लेकिन आप winners को भी देखिए, जैसे कि मिस अरुणाचल winners जो है और मिस इंडिया का winners जो है, आगे जाके वो लोग बहुत नाम कमाया, अच्छा नाम कमाया. And if you talk about me, then हम भी जाके रुका नहीं है. I did my best to prove that I'm worthy of this title. Yes. I did. And even if you look at Priyanka Chopra or Aishwarya Rai or someone, they are always helpful to people who are deprived of opportunities. So they do their best to work for the underprivileged. So you know, it somehow justifies when you look at that aspect in like generally if you look at that.
बट आई अंडरस्टैंड कि लोगों को लगेगा कि ये एक सर्टेन लिमिटेशंस में बाउंड है बोल के. आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है ये चीज़ भी. नाउ पीपल स्टार्टेड टू एक्सेप्ट मोर. अभी ब्यूटी पेजेंट्स भी टाइम के साथ में बढ़ता चला आ गया है. वो लोग भी अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. इवन व्हेन आई वॉन मिस अरुणाचल, मेरा जो रनर सब था वो दोनों यू नो दे वर थोड़ा सा हैवियर इन द हैवियर साइड. तो उन लोगों को बहुत ट्रोल किया गया है. आपको तो पता है ट्रोलर्स होता कैसे है. तो लेकिन उन लोग का जीतना, उन लोग का वो कंपटीशन में मतलब विनर्स का जो प्लेसमेंट था उन लोग को मिलना, ये एक प्रूफ है कि यू नो it's not just about body, it's not just about look, it's how you present yourself in front of people. Right. Now, during your reign as Miss Arunachal 2021, you have done a lot of work, and I have personally seen that on Facebook as well. Can you tell us what has been the most satisfying experience for you while doing all that work? You know, we always when we participate in a certain pageant, जैसे कि हम जब मिस अरुणाचल में participate किया था, तब हर इंसान का एक फेवरेट कंटेस्टेंट होता है. और अगर वो नहीं जीतेगा तो उन लोगों का दिल पे यू नो वो दे आर हर्ट कि उन लोगों का फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं जीता है. सो दे टेंड टू अटैक the winners. Right. In that case, it was me. So they were like, you know, she did not deserve it. She was not worthy of it. Right. And ऐसा बोलने के लिए शुरू हो गया after the competition, after I won. So I felt really bad. Maybe for 1 or 2 days. I was very sad. I was over the phone with my father and my sisters and everyone. Like, where did I go wrong? Ki people hate me so much. But as the time went by, I started working, or dhire they started to see my work. That you know, when it's for me, it was not just about winning the crown. Right. It was about working for them who were trolling me. उनके लिए ही मेरा काम करना, मतलब काम करना था, वही था मेरा. तो धीरे धीरे जैसे टाइम पास होते गया, वही ट्रोलर्स दे स्टार्टेड टू लव मी. इंस्टेड they appreciated me for what I've become in that journey, for everything that I've did, and I was really happy about it. So that जो ट्रांजिशन था ना कि haters लोग जो एकदम हाँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत इम्पैक्टफुल सफर रहा. Somewhere do you think that maybe this trolling bit जो है वो शायद इसलिए भी होता है कि क्योंकि in the past I think lot of ये tokenism वाला जो social work लोग करते थे वो don't really probably इतना mean करके नहीं, but rather because खिताब जीता है तो करना पड़ेगा उस हिसाब से करते थे. But I think in your case probably it came across कि she's doing it genuinely. Yes. Do you think that probably helped? See, सोशल वर्क आप करो या ना करो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू. ये आपके ऊपर में है. इफ़ यू बिकम द विनर, आप सोशल वर्क करना है तो वो आपका विश है. आप बिना सोशल वर्क करे भी तो किसी को आप इंस्पायर कर सकते हैं. यू नो, जस्ट विथ योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स भी आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं. तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी. लेकिन हाँ, जब हम एंड मेरा जो काम है, you know, it's somewhere that I really connected, and it connected with the people of Arunachal as well. So maybe that's why they had this kind of a thing with me, and people tend to think कि you know, मेरे केस में भी शायद they thought कि ये जो कर रहा है ये अभी के लिए सिर्फ कर रहा है, just because she won and she don't have any choice. She has to do this thing. So maybe they thought like that, but it's not the same case for me. Right. I was doing social work since I was in my college years. So I joined NSS, National Service Scheme college में. 3 years I volunteered for many blood donation campaigns, volunteered in orphanages, old age home. तो मेरे लिए it became like a usual thing कि मेरे और genuinely when I see someone कि मेरे वजह से कोई अच्छा महसूस कर रहा है, कोई खुशी महसूस कर रहा है, तो उसको देख के हमको भी अच्छा लगता है कि अरे मेरे वजह से किसी का दिन अच्छा बन गया. So मेरा साथ ऐसे नहीं था कि एब्रप्टली आया कि अभी आई वांट कि अभी करेगा ऐसा करके. पहले से करते आया है, लेकिन जब विनर बन गया मिस अरुणाचल का, then people started seeing it in a different sphere.
Now, having been part of so many beauty pageants, can you tell us, is there any aspect, ऐसी कोई चीज़ है जिसको शायद आप बदलना चाहेंगे, आपको लगता है कि शायद maybe this can be done better? Is there anything that comes to mind? As I said earlier, अभी तक भी बहुत सारा क्राइटेरियाज है ना, तो I want to मतलब वो सब क्राइटेरिया नहीं होने से ही ठीक है लगता है, ताकि लड़की लोग इवन जो शॉर्ट हाइट वाला है, स्पेशली हाइट को लेके देखिए, दे विल एक्सेप्ट थोड़ा सा हैवियर, बट आई डोंट नो दे विल एक्सेप्ट शॉर्टर गर्ल्स और नॉट. सो आई वांट इट टू बी ओपन फॉर एवरीवन. I think it will be very nice to see all the girls with different shapes and sizes and everything participating and judging them on their solely based on their personality and their performance, not because of their physical appearance. That's a very good point. I think especially with the height part, considering you are blessed with good height, but considering the average height especially Arunachal ka ladki ke liye na, like North Easterns, we are not very tall, we are not in the taller side, so unke liye bhi shayad ye acha rahega. And there are so many girls who aspire to be in this platform, but who do not cross the yes. So I think that will be helpful for them. Absolutely, we would definitely like to see more variety, I suppose, in that. Is there any particular incident that you can think of which happened to you during the pageant, which you can look back and say कि ये बड़ा अजीब सा कुछ something funny which happened to you? In Miss India? Any of the pageants so far. There are a lot of things. Sometimes diet is very important, so we had to go on a very strict diet, but I am naturally skinny. So मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, लेकिन it's because of the dresses जो designers बनाते हैं, क्योंकि वो लोग already pre-made होता है, तो वो लोग एक पर्टिकुलर साइज में आता है, तो we have to fit in that size. Yes, मतलब उसको छोटा कर सकता है, लेकिन उसको बड़ा नहीं कर सकेगा आप. So some of the girls, they go on a very strict diet, only fruits the whole day, they won't drink anything else rather than water. ऐसे तो वो सब देख के हम दुख भी लगता है, और मतलब it's very ridiculous. But I understand from their point of view as well, because maybe it's hard for them to control their weight, that's why. But I wish that कि designers और जितना काम होता है वो लोग हाँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने से और अच्छा होना था. मे बी अगर फिट नहीं हो रहा है तो मे बी मेक एन एफर्ट टू मेक अ डिफरेंट ड्रेस फॉर हर, ऐसा कुछ होने से अच्छा होगा. समटाइम्स व्हाट वी डू इज़ लाइक हम लोग का शूट्स होता था, तो शूट्स में इफ़ वी वेयर द डिज़ाइनर क्लोथ्स, बिकॉज इट्स लाइक 2-3 lakhs का आउटफिट, सो एक बार पहन लिया तो हम लोग जो कुछ खा नहीं सकते, सो वी वेंट फॉर लाइक 6-7-8 hours without meal, कुछ भी नहीं खा के. So I think that is very ridiculous and funny at the same time. Okay, last question. You were recently part of a theatre production. Yeah. जहाँ पे आपने acting की, and I saw it, so I can say that you did a very good job. Thank you. Any plans of moving ahead in that direction? Not necessarily theatre, but maybe in films, especially considering that we now actually have a fair bit of representation from our state, especially former Miss Arunachal who are actually doing good in Bollywood. आपका कोई ऐसा plans है? I'm interested in this field as well. I think जब हम participate किया था first time ये production में, तब I came to know about a different area of art. तो वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिला है, and definitely I'm very much interested. लेकिन if I see it in मतलब बड़ा एरिया में देखा जाए, तो बड़ा स्पीयर में देखा जाए, तो जनरली टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड इन सॉर्ट्स, तो आई थिंक कि वहाँ पे आई कैन ट्राई, बट इट्स नॉट वेरी कंसिस्टेंट आई फील, फॉर स्पेशली फॉर एक्टर्स हु आर बेस्ड इन नॉर्थ ईस्ट. हम लोग के लिए थोड़ा मतलब कंसिस्टेंट नहीं होगा, बिकॉज रोल्स आर नॉट वेरी मच रिटन फॉर अस. बट व्हाट आई फील इज़ दैट अरुणाचल में ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ये चीज़ का. नाउ वी कैन सी कि बहुत सारा आर्टिस्ट लोग आ रहा है, सिंगर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड ऑल, बहुत अभी मतलब आ रहा है. तो आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज़ ट्राई टू बी सस्टेन
sustainable ourselves so that our entertainment industry can Okay. flourish more. So that's what I want. I don't want to, go and ask them for representation. I want to work here, build our own industry. Beautiful thought, beautiful thought. Thank you. And unfortunately, we are out of time, so we'll have to finish our conversation here. Otherwise, a very interesting conversation that was we've had with Miss Tengam Koyu. And as you can see, जैसा आप देख रहे हैं कि she is not only beautiful but very talented और बहुत ही एक समझदार युवती हैं. तो इनसे हम आशा करते हैं कि ये बहुत आगे जाए अपने फील्ड में और कोई भी चोजन फील्ड में आगे जाए और अपना और अपने फैमिली और हमारे स्टेट का नाम भी रोशन करें. So thank you very much once again, Thank you so Tengam, for much. being with us. And friends, with that we are finishing the show. Hopefully आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द और एक नई प्रोग्राम में. तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ. थैंक यू. बाय बाय.